Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today we are having the lecture. We have to go through the units. So what is a unit? To look at that one, unit. A unit is a standard used for making the comparison in a measurement. अब यहाँ पे जब हम यूनिट की बात कर रहे हैं, यूनिट conversions allow for the measurement of a property that have been recorded using the different measuring instruments. जैसे सपोज करें मैंने आपको एग्जांपल दी लेंथ की, लेंथ को आप मीटर रॉड से भी मेजर कर सकते हैं, लेंथ को आप वर्नियर स्केल से भी कर सकते हैं, लेंथ को आप माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से भी कर सकते हैं. तो इस तरह से जो स्टैंडर्ड होता है वो सेम रहता है. जैसे सपोज करें यहां पे आपको नजर आ रहा है द मीटर इज द वन स्टैंडर्ड ऑफ द लेंथ, यानी लेंथ के स्टैंडर्ड को क्या कहा गया, मीटर. इसी तरह से लीटर क्या है, लीटर इज द स्टैंडर्ड ऑफ द वॉल्यूम. तो डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने, आपको याद होगा, फिजिकल क्वांटिटीज के 3 टाइप्स अपने पढ़े थे. तो जाहिर है जितनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उतने टाइप्स यूनिट्स के भी होंगे. जैसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी, तो वो यूनिट्स जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करेंगे उनको हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स कहेंगे. और वो यूनिट जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करेंगे उनको हम ड्राइव्ड यूनिट्स कहेंगे. और वो यूनिट्स जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करेंगे उनको हम क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखें फंडामेंटल या बेस यूनिट्स क्या होते हैं. द यूनिट्स यूज्ड टू मेजर द बेस और द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स. In this chart there are the 7 fundamental quantities: length, mass, time, electric current, intensity of the light, temperature and amount of the substance. ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इसमें से लेंथ का यूनिट एसआई सिस्टम में मीटर है, मास का यूनिट किलोग्राम है, टाइम का सेकंड है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर है, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट का कैंडिला है, और टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल है. तो ये आपके सामने इनके सिंबल्स भी नजर आ रही हैं. सो दैट these are known as fundamental physical quantities and their units are known as the fundamental units, which are given in this chart. When we talk about the derived units, the units obtained with the help of 2 or more than 2 fundamental units are known as derived units. याद रखिएगा, fundamental units are independent units, but the derived units depends on the fundamental units. So when the 2 or more than 2 fundamental quantities multiplied or divided, we get the new units, we get the new quantities. Those quantities are known as the derived quantities, and the units which express the derived quantities are known as derived units. Now when we talk about the derived units, there are the infinite derived units, because in a fundamental units we have the 7 fundamental units, but for the derived quantities there are the number of the derived units. Some examples are given in this chart. You can see there. Speed, its unit is meter per second. It's a derived quantity and its unit meter per second. This one is a derived unit. Acceleration, its unit is meter per second square. So acceleration is a derived quantity and its unit meter per second square is derived unit. In the same way, volume is a derived quantity and its unit is cubic meter. So force is also a derived quantity in SI system and its unit is Newton. Or you may say kilogram meter per second square.
And in the same way, when we talk about the pressure is also a derived quantity. Its unit is the Pascal. That one is Newton per meter square. In a same pattern, you know that we have already discussed in a physics, there are two supplementary quantities. Those are the geometrical quantities. One is plane angle and other one is solid angle. So you know that the unit which represents these supplementary quantities, means plane angle and solid angles, those units are known as the supplementary units. In SI system, the unit of plane angle is radian, while the unit of solid angle is steradian.